everyone, I welcome you all to yet another lecture on word formation. In the last lecture, we discussed about different processes of word formation कि हम किस किस process से new words बना सकते हैं और इस lecture में हम उसका practical demonstration करेंगे कि कैसे हम different grammatical categories के words form कर सकते हैं. How do you form different grammatical forms of a word? Generally एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कि एक वर्ड है और इसको आपको डिफरेंट ग्रामेटिकल कैटेगरीज में कन्वर्ट करना है. तो आप ये कैसे करेंगे? इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टिप्स व्हिच यू कैन फॉलो फॉर वर्ड फॉर्मेशन. As you can see in this table, we have different grammatical categories, for example noun, adjective, adverb and verb. तो एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है दैट यू आर गिवन अ वर्ड एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सी ग्रामेटिकल कैटेगरी में फिट होता है. और यू माइट बी गिवन अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई, और आपको एक वर्ड दिया जाएगा और आपको उसकी डिफरेंट ग्रामेटिकल कैटेगरीज फॉर्म करनी है. तो इस टेबल के यूज से आप एक सिंपल मेथड यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो वर्ड किस ग्रामेटिकल कैटेगरी में आता है. और अगर आपको एक वर्ड से दूसरी ग्रामेटिकल कैटेगरी बनानी हो तो आप इस सिंपल टेबल को फॉलो करके वो क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. व्हेन अ वर्ड एंड्स विथ ION, NESS, MENT, ANCE, CY and TY, it is a noun. So how do you identify if a word falls under the category of nouns? आप उस वर्ड की एंडिंग नोट करेंगे. इफ द वर्ड एंड्स इन दीज फॉलोइंग देन दैट इज अ नाउन. फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन, it ends with ION, so it is a noun. Adjective, how do you identify an adjective? An adjective ends with FUL, LESS, IVE, OUS, ATE, SONE. तो जब वर्ड्स की एंडिंग्स इनमें से कुछ होंगी तो यू कैन रिकॉग्नाइज इट एज एन एडजेक्टिव. फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेटिव, IVE इज एन एडजेक्टिव. मूविंग ऑन टू एडवर्ब. एडवर्ब्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं? व्हेन यू ऐड ly टू एन एडजेक्टिव इट फॉर्म्स एन एडवर्ब. फॉर एग्जांपल स्लो इज एन एडजेक्टिव, बट व्हेन यू ऐड ly it becomes slowly, it is an adverb. Swift is an adjective. When you add ly, it becomes an adverb, swiftly. For example, information, informative, informatively becomes an adverb. And lastly, how to identify a verb? When a word has a past tense. जब किसी word का past tense possible है, तभी वो verb कहला सकता है. अगर word का past tense possible नहीं है, तो वो verb नहीं हो सकता. For example, inform. The past tense of inform is informed. So you try making the past forms of the word. अगर उस word का past tense possible है, तभी वो verb बन सकता है. So using this table, you can identify how, in what category a word belongs to. इसका एक और simple तरीका है. आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर सीख करके भी पता लगा सकते हैं कि वो वर्ड कौन सी ग्रामेटिकल कैटेगरी में फिट होता है. फॉर एग्जांपल नाउन आंसर्स द क्वेश्चन क्या, व्हाट इज. इंफॉर्मेशन क्या है, ये इंफॉर्मेशन है. सो व्हेन अ वर्ड आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ व्हाट क्या, इट इज अ नाउन. व्हेन अ वर्ड आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ कैसा है, हाउ, it is an adjective. कैसा है, informative है. So these are the two tips you can utilize to identify if it is a noun or if it is an adjective. Adding ly to the word makes it an adverb, and the past tense of a word ensures that it is a verb. Let us discuss some examples using this table so that you are able to better identify the grammatical categories of words. The first example, attractive. The word attractive has IVE in its end. So as we discussed in the previous table, any word ending with IVE falls under the category of an
adjective. And attractive का noun form क्या होगा? Attraction, ending with ION. And adverb कैसे बनता है when we add ly to the adjective? So attractive plus ly becomes attractively, which is an adverb. And how do we form a verb? A word that has a past tense is called a verb. So attract has a past form, that is attracted. Therefore, this is the verb form of the word. Attraction, attractive, attractively, and attract. The next example is different. When you look at the word different, how do you identify which grammatical category it falls in? As we discussed, that adjective answer the question of how. कैसा है? So, वो different है. When you question yourself कि वो कैसा है, वो different है. So it falls under the category of adjective. Difference becomes the noun. Adding ly to the adjective differently forms the adverb form. And differ is the verb form because it has a past form, that is differed. Third example, agreement. Agreement answers the question of kya, what. Therefore, it falls under the category of noun and it has ent in its end. As you can identify from the previous table, agreeable becomes the adjective, agreeably becomes the adverb, and agree is the verb because it has a past tense, that is agreed. The fourth example, satisfy. Satisfy forms satisfaction, which is noun, satisfactory, which is adjective. Adding ly, satisfactorily forms the adverb, and satisfy is the base form, that is the verb, because it has a past tense, that is satisfied. The last example is help. Help is the noun form. Helpful, adding ful to it forms the adjective. Helpfully, adding ly to the adjective forms the adverb form. And help itself is the verb form. Base word, because इसका past tense possible है. Help का past tense है helped. तो ये एक्सरसाइज हमने की है प्रीवियस स्लाइड के टेबल को यूज करके, इन विच वी नो कि हम लास्ट की एंडिंग्स देखकर कैसे वर्ड की ग्रामेटिकल कैटेगरी को आइडेंटिफाई करेंगे. हम जब एंडिंग्स को देख लेंगे तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वर्ड कौन सी ग्रामेटिकल कैटेगरी में फिट होता है, और हम क्या और कैसे के क्वेश्चन के आंसर्स को भी ध्यान में रख के ग्रामेटिकल कैटेगरीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड adverb and verb are the easiest to identify because you have to look for ly and the past tense of the word. Thank you for today's lecture.